So, we're going to see today graphical method of pair of linear equation in two variables. The general format of pair of linear equation in two variables is a1x plus b1y plus c1 equals to 0. Second one is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. There are three conditions of lines. Either it can be intersecting, parallel or coincident. For intersecting lines, it has unique solution. For parallel lines, it has no solution. For coincident line, it has infinitely many solution. Now, how to check a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2? A1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2 for parallel lines, and in coincident line a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Clear? Find the value of m for which the pair of linear equation has infinitely many solution. a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 लिखा हम लोग ने यहाँ पे. कंपेयर करेंगे फर्स्ट टू देन लास्ट टू. On comparing the first two, a1 upon a2 and b1 upon b2, the value of m is plus minus 6. Comparing the last two, the value of m is 0 and 6. We are having 6 as a common value, therefore the value of m is 6. Clear? We have to check whether the given equation has unique solution or not. What is the condition of unique solution? a1 upon a2 must not be equal to b1 upon b2. By applying the value 2 upon 3 is not equal to 1 upon 2, therefore the above equation has unique solution. We're going to solve the quiz in the last. What is the general format of pair of linear equation? Ax plus by plus c equals to 0, where x and y are the variables and a, b, c are real numbers. For example, we have the equation 3y equals to 5x plus 40. So in proper format, it will become minus 5x plus 3y minus 40 is equals to 0. The value of x is minus 5, the value of b is 3, and the value of c is minus 40. Clear? So we have already discussed this table. Now moving on further. सॉल्यूशन कैसा होगा इसका? इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस का इनकंसिस्टेंट, अगेन कोइंसिडेंट लाइन का कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द सॉल्यूशन. कंसिस्टेंट फॉर इंटरसेक्टिंग, इनकंसिस्टेंट फॉर पैरेलल एंड कंसिस्टेंट फॉर कोइंसिडेंट लाइन. ओके, अब देखो, इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस. इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस. ठीक है. अब कंसिस्टेंट में दो हैं, यूनिक एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. यूनिक कब होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन. यूनिक कब होता है? इंटरसेक्टिंग मेनी लाइन. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन. नाउ कंसिस्टेंट कैसा होगा यहाँ पे? इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट कैसा होगा यहाँ पे? इंडिपेंडेंट. एंड इन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन, इट इज डिपेंडेंट कंसिस्टेंट. इट इज डिपेंडेंट कंसिस्टेंट. हैव यू नोटेड द डिफरेंस? कंसिस्टेंट कैसा होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में डिपेंडेंट कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट. चलो, check whether the following is consistent or inconsistent. The value of a1 b1 c1 are this, and the value of a2 b2 c2 are this. Comparing the following values. ठीक है. वैल्यू कंपेयर करने के बाद यू हैव टू सिंप्लीफाई ऑल्सो. ठीक है. On comparing the value of a1 upon a2, the value of b1 upon b2 and the value of c1 upon c2 are equal. So it is, कैसा है ये? कंसिस्टेंट है. लेकिन कैसा? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट. अभी जस्ट देखा था डिपेंडेंट कंसिस्टेंट. देखो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसा है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट है लेकिन उसमें भी कौन सी वैरायटी? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट. ठीक है. क्लियर? Check whether the following has no solution. What is the condition of no solution? Means parallel lines. So a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. These are the values of a1 b1 c1, a2 b2 c2. Compare किया. So a1 upon
a2 is equal to b1 upon b2 है, but it's not equal to c1 upon c2. It means it is parallel lines, no solution. It is a parallel line, no solution. Clear to each and everyone? Difference between intersecting, coincident and parallel. ठीक है, देखो coincident का एग्जांपल हो गया, पैरेलल का एग्जांपल, अब इंटरसेक्टिंग का एग्जांपल. ठीक है, we're going to see, which we're going to solve in the last. चलो, identify which of the following linear equation in two variables are inconsistent. ठीक है, तो सॉल्यूशन का पार्ट है, क्विज का पार्ट है, हम लोग बाद में देखेंगे. चलो, find the value of k for which it represent a coincident line. What is the condition of coincident? This is very important. The condition of coincident is a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 all are equal. a1 b1 c1 की वैल्यू निकाली, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली. ओके, कंपेयर किया, कंपेयर करो भैया. 3/6 माइनस 1 अपॉन k. कंपेयर करेंगे, 1 upon 2 is equal to minus 1 upon k. The value of k is minus 2. The value of k is minus 2. Clear? The value of k is minus 2. Minus 1 upon minus k है, sorry. Minus से minus cancel. Value of k is plus 2. The value of k is plus 2. Clear? Say yes or no. Clear है? The value of k is plus 2. I will give you the time to solve the quiz. Don't worry. Summary, हमने क्या पढ़ा? There are three pairs of lines intersecting, parallel and coincident. Three types की line होती है. Pair of lines. It can be intersecting, parallel or coincident. For intersecting, it has unique solution. For parallel, it has no solution. And for coincident line, it has infinitely many solution. Check करने का तरीका, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. For infinitely many solution, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Clear? Consistent कहाँ पे होगा? Intersecting lines. Inconsistent parallel lines. Again coincident में consistent. Coincident में कैसा consistent होता है? Dependent consistent. Intersecting line में कैसा होता है consistent? बताओ. Independent consistent. Clear? Okay. बोला था यूनिक सॉल्यूशन में कैसा कंसिस्टेंट होता है? इंडिपेंडेंट. और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट कैसा होता है? डिपेंडेंट. सो वी आर गेटिंग कंसिस्टेंट इन यूनिक सॉल्यूशन and infinitely many solution, or inconsistent no solution, that is parallel lines. Okay.